record everything. Okay, so Yes. no need to write, and even I will provide you the PDF of the session also. Yes, sir. And the recording session you will get it after the 1 day. Okay, Yes. I have to do some editing work, and then I will send the video through the YouTube channel. Okay, Yes, sir. so no need to write everything, because you will get the PDF, you will get the recording. Okay, but yes, Yes. I will ask to write it down, then you can write it. Okay. Yes. Okay, fine. So actually I forget to ask the demo topic, so I have selected the topic from my side for today, Yes, but sir. I will go according to your things, what is going in your school. So I think in your school you have done the heroine's formula, right? No, sir. Heroine's formula not done. You are in the No, grade, sir. you are in the grade 9 CBSE, right? Yes, sir. Yeah. Okay, fine, fine. Okay, so heroine's formula. If you oh, so which chapters you are done in the school? Sir, currently we're doing polynomials. Okay, you are doing polynomials. Yes, Okay, sir. okay, fine, fine. So in okay, so I will go according to the polynomial. If you are doing the polynomial, I will go to the polynomial. No problem. I will select the topic the same whatever you are doing, so you will understand better. Okay. Yeah. So just give a second. I will start with the polynomial. Sorry, because I have not asked earlier, so I have selected heroines, but no issue. I will go with the polynomials. Okay. Yes. Okay. So give me a moment. I will write down the name of the topic here. Okay. So polynomials. What do you know about the polynomial? Can you just let me know whatever the wrong, right? Tell me anything. Um, Sir, a polynomial has terms in it. Okay, polynomial has term. Okay, and Um, yes, tell me. uh, I'm not sure, sir. Okay, no problem. I will tell you. In the mathematics, I think many times you have seen like this: 7x plus 5, Okay. 3x square minus 8x plus 9. Or you can say you have seen many equations like this: a power 4 minus 81. So Yes. these things I have written here these things, right? Like Yes. many examples, I will show you one more example. You have seen x cube plus 2x square plus 5x plus 10. Yes. So these things I have written on the board. What are these things? What are these Uh, things? Sir, the term No, these things are called as expressions. These things are called as expression. expressions. Okay. Yes. So these are known as expressions. Okay. Uh, Expressions, you know that these are the expression. And I think you have heard about equation. Have you heard the name equation? Yes, sir. Okay. Am my voice is clear to you? Yes, sir. Okay. Now, I will just give you a clear idea what is equation and what is expression. So you can easily differentiate it, because this is very, very important thing. Yes. Okay. I'm writing expression in the left, and I'm going to write down the equations in the right hand side. Okay. Yes. Look here. I have written 7x plus 5. I have written x square minus 3x plus 2. I have written here 2x plus 5y plus 10. Can you see that? Yes, sir. Can you read what expressions I have written? 7x plus 5, Mm-hmm. then x squared minus 3x plus 2. And Mm-hmm. after that, 2x plus 5y plus 10. Okay. Now look here in the right hand side. I'm going to write it down something. I think you know the Hindi language also, right? Yes, sir. Okay, that's great. That's great for me.
देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने मर्जी से इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक है, कहीं से देखा नहीं, अपनी मर्जी से जो मन किया वो लिख रहा हूँ रैंडमली, कोई नंबर्स से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। Just Yes. want to differentiate between expression and equation. Expression में क्या होता है, we just write a expression, we don't put equal to sign. Have I put equal to sign in the left No. hand side? No, but I have put the equal to sign in the right hand side. In the Yes. right hand side there is one more chance that, give me a moment, give me a second. In the right hand side there is one more chance that sometimes they can write it like this. They can write it like this. Can you see that? Yes, sir. Can you read whatever I have written? Sir, in the box or everything? Yes, in the box I'm writing. I'm asking. X square minus 3x plus 2 is greater than or equal to 0. Yes, we call it as inequalities. What we call it as? Inequality. Inequalities equations. देखो यहाँ ऊपर पे सिर्फ equal to symbol है, so that is the reason we will say it as equation. देखो बस यही difference है ना जी, 7x Yes, sir. plus 5 यहाँ भी है, 7x plus 5 right hand side में भी है, right? Yes. यहाँ पर भी 3x square minus 3x plus 2 लिखा है, यहाँ भी x minus 3x plus 2 लिखा है, बट यहाँ मैंने equal to sign put up कर दिया है। क्या put up किया? Equal to sign. That's the reason we call the left hand sides are expressions and the right hand sides are known as equations. Are you clear with that? Yes, sir. Okay, now the thing here comes, you were using the word terms, right? Yes, sir. I will explain why you were using the word terms. There is a reason. We write down the expressions, or equations with the help of terms. With the help of terms, we can write down the expression. Okay? Yes. Okay. So now I will explain, first of all, I will explain what is, okay, before going further, I would like to explain something more in this. Polynomial is divided in two parts. Polynomial is Divided into 2 parts. two parts. Okay. Just hold a second. One part is based on terms, and the another part is based on degree of expression. Degree of expression. I will explain each and everything, not to worry. I'm just writing the names. I think you have heard about it. So you will feel familiar with the names. Monomial, binomial, trinomial. Have you heard these names? Yes, sir. So trinomials, and we can say polynomial. Okay. Yes. In the right, based on degree of expression, I think you have heard about the names like linear expression. Linear expression. You have heard the name quadratic expression. You have heard the name cubic expression. You have heard the name biquadratic. Have you read these things in your school or not? Sir. Okay. And the fifth one is polynomial. Okay. One more thing I would be very clear. Suppose if you're not getting any point, Yes. at the same time, you should stop me and you should ask your doubts. Okay. Without knowing, without understanding the concept, we will not move further. Yes. Now, here I have divided the polynomial in two types. One is based on terms and one is the based on degree of expression, right? Yes. I have already given the names, what we called it. Okay. So let me explain first what is term, and then I will explain each monomial, binomial, trinomial one by one. Okay. Yes, sir.
So now I'm going to tell you what is term. What is term? Term. So the answer of what is term is a term can be a constant. A term can Can be be a constant. Like example 5, 10, 7, 20. Any number which yes, can be a constant is also a term. Okay? yes, sir. Now, second thing. Term can be a variable. Term can be a variable. Do you know what are the Yes, variables we have? yes, sir. What? So like X, Y, Z. Right. X, Y, Z, A, B, C, like anything, right? Yes, sir. Okay. Now, the product of terms can be product of constant and variable. I will give you example. I have 5 and x. So 5 is a constant and x is what? X is A a variable. variable. So can we say it as 5x? Yes, sir. Another example, 20 times y. So it will become how much? 20y. 21. So 5x is also a term, 20y is also a term. Okay. Yes, A sir. term can be also, it has 4 definitions. Now you can see term के कितने सारे definitions हो गए, right? Yes, sir. So, but they are very easy. I will explain how we utilize the terms. मैं बस अभी बताने जा रहा हूँ term होता क्या है, right? Yes, So product of variable, product of variables and constant is also known as a term. देखो मैंने यहाँ पे variables यूज किया है, ऊपर में सिर्फ variable यूज किया है. इसका yes, रीजन sir. ये है, suppose I am writing 5 times x, तो ये variables हो गए ना x and x, right? Yes, sir. So it will give me how much? It will give me 5x square. Yes, sir. Similarly, I will write 8x times y times z. So it will become how much? It will become 8xyz. Yes, sir. So do you understand what is term? Yes, sir. So can you just read out what is term? Just definition. It can be a Sir, constant. a term can be a constant, a variable, a product of a constant and variable. Right, good, correct. Okay, now look here. I'm going to write a expression. Always remember how to write a expression. The thing is comes how to write a expression. So addition, can you hear me? Yes, sir. Addition and subtraction of term can be used. Addition and subtraction of terms can be used to write a expression. Okay. Yes, sir. I will explain. Just I will explain. Note, Yes. multiply and division should not use. Should not use. Uh, I will explain right now. Give me a second. Yes, sir. I have taken a term 7x. It is a term or not? Yes, sir. Okay, one term. Second term I am writing. 5 is my another term, right? Yes, sir. Okay. Third I am taking 2x square. What I have taken? 2x 2x square. square. How many terms I have taken right now? 3. 3. Now look here. 3 terms I am just writing down in the left hand side. Now look here. What I will do. Yes. 7x plus 5. Is it an expression? Um, Yes, no, because sir. yeah, it is Yes, expression. I have yes, sir. used 2 terms, first term and second term. Can you see that? Yes, sir. Okay, second example,
2x square plus 7x plus 5. It is expression? Yes, it is Yes, sir. expression. How many terms I have used? 3. 3 terms. Okay, good. Another example. 2x square minus 7x plus 5. Can you see that? Yes, sir. What is the difference in second and third example in this? Sir, in the third example, you use different signs, but it's Yeah, still an expression. good. Now look here, just look here. ये तो चलो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बना दिया, राइट? Yes, अब sir. जरा यहाँ देखो, मैं इसको लिखता हूँ 7x times 5. It will give me how much? 35. So it will give me expression. Yes, sir. No, it's not. Sir, Multiplication. equation. Multiplication is not giving me a, it's just giving me a term. It's just giving me what? It's just giving me a term, Yeah. right? Okay. So do you understand how to write down the expression? So Yes. we can add, we can subtract the terms, then we can write an expression, right? Yes, sir. Okay, now listen to me very carefully. How many terms I have used in this first one? 2. So what will be the name? Binomial. Good. How many terms I have used here? Sir, trinomial. It's Three. 3. So 3 terms means trinomial, right? Yes, sir. So if I write it down here, monomial किसे कहते हैं? Suppose anybody ask me, right? So Yes, sir. the expression which has only one term is known as monomial. Binomial. The Yes, sir. expression which has 2 terms, that's known as binomial. Binomial. The expression which has 3 terms, that's known as Trinomial. trinomial. And more Yes. than 3 को क्या बोलेंगे हम? Polynomial. More than 3 को हम बोलेंगे polynomial. Is that clear with you? Yes, sir. तो एक काम करो, आप जल्दी से ना ये वाला जैसे मैंने चार्ट बनाया है, बस इसको आप ड्रॉ कर लो समझने के लिए. Okay, only for your understanding. Yes, sir. Yeah, do it fast. Noted? Yes, sir. Okay, fine. So we have understand the polynomial based on terms, right? Yes. Now we have to understand polynomials based on degree of expression, right? Yes, But sir. we should know what is the degree of expression. Do you know what is the degree of expression? Sir, the highest um, Yes, yes, tell me. uh, degree is the highest index. Okay. This is the expression I have given you. Can you see that? Yes, sir. What is the degree of this expression? Um, 4. 4. How? Can you explain? Um, we add x and y, the, Oh, okay. the powers of x and y. Okay, okay, right. You are right. The degree of expression of this expression is 4. Look here, what, how to do? I will just give you a quick shot of it. What Yes, is, sir. how many terms I have used in this? Tell me. 5. 5 terms. First term may, what is the power on the first term? 3. What is the power on the second term? 4. 4. What is the power on the third term? 1. No, 2. 1, 1, 2 हो जाएगा. Oh, yes, sorry. And here it will be 1. 1 and here it will be 0. सबसे बड़ा 0. number कौन सा है? Power में 4. सबसे 4. So 4 will be the degree of this expression. Yes, sir. Clear? Yes. Okay. Similarly, I will ask one more. So it's very good for you. Okay. So Yes. you can see I'm just okay. What is the degree in this problem?
Degree of expression. The degree is 5. Degree will become here 5. good. So degree of expression, we can say it as 5. So good. That's, you know about it. So we can directly come to our things. So linear को किसको कहेंगे? The degree is coming 1 is known as linear expression, right? Yes. The degree of expression will be 2, that is called as quadratic. Yes, sir. Cubic में क्या होगा? 3. Biquadratic में हो जाएगा 4. And if you are getting more than 3, that is called polynomial, right? I will give Yes. you examples. Don't worry. I'm just going to write it down here again. So Yes. I'm just writing here linear. So linear expression may degree of expression will be how much? 1. 1. Okay. As example, 3x plus 10. Can you see that? Yes, sir. 7x plus 2y plus 20. So in this expression, what is the degree? Degree? Sir, 2. It's quadratic. No. Degree I'm talking. Degree. Can you see the Oh, very? yes. Sorry. In the first one, it's 1. Huh? Good. And in the second one, it's also 1. It's also 1. But what is the difference in this? This is called linear expression with one variable. What is the difference? One It has variable. But in this expression, we called it as linear expression with 2 variables. आप क्लास 9th में हो, आप देखना है आपके मैथ्स में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स. ओके, एंड क्लास 10th में भी है सेम इस तरह का. सो 2 वेरिएबल्स एंड 1 वेरिएबल का डिफरेंस समझ में आया? दोनों लीनियर इक्वेशन ही है. क्लियर है? Yes, Is sir. that clear? Yes, sir. Okay, so the linear is clear. So we will move for quadratic. Just hold a moment. So quadratic expression. So what will be the degree in this? 2. Degree in the expression will become here 2. As example, x square minus 3x plus 5 or plus 2, whatever you want to put it, you can say it here. Any problem? No. Okay, so I will just give you very quick short of it, cubic and biquadratic. So we can move fast. Okay, can you see I have uploaded here the cubic and biquadratic? Yes, sir. So in the cubic one, you can see they have told the degree must be 3, right? So Yes, you can see that this is the expression they have used. And how many terms have they used in this expression? 4. They have utilized 4 terms, right? So 4 terms they have used, and the Yes. degree is coming 3. That's why we call it as cubic. And Yes, what about the biquadratic? Biquadratic degree will be 4. More 4. Yes, sir. Okay. So do you clear about these things? Yes, sir. Okay. So आप को मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप इसको देख लेना बाद में, कोई इशू नहीं है, and you will get the video also, so there will be no issue, right? Okay. Now यहाँ तक मैं थोड़ा सा फास्ट आया था because I thought you know about it. Now I will move little slow, and our new subtopic in this chapter is zero of expression. Do you know what is zero of expression? Zero of expression. Yes. Any idea? No, sir. Okay, you don't know. Okay. Fine, no problem. Just give me a moment. Yes.
I'm taking one example, okay, and then I will let you know what the zero means. Okay, Yes, sir. एक जरा काम करो, मैं बताता हूँ. मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, Yes, sir. ताकि आपको क्लियर हो. मैंने एक इक्वेशन लिखा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन px. क्या है एक्सप्रेशन? px. Yes. This expression is 5x minus 10. क्या है ये? 5x 5x minus minus 10. 10. इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ. मतलब ये होता है कि p is a polynomial. p is a Polynomial. polynomial which is written in form of x. px का मतलब होता है p, मैं वहां लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. px की मतलब होती है polynomial written in x. देखो ये x के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है. एज एग्जाम्पल मैं एक और लिख देता हूँ, पी टी. कैन यू सी दैट? Yes, sir. So I will write down here 3t square minus 2t plus 8. मैंने कुछ ऐसा रैंडम एक्सप्रेशन लिखा. सो pt का मतलब हो गया कि pt का मतलब हो गया पॉलिनोमियल written in t फॉर्म. देखो ये Yes, पूरा sir. एक्सप्रेशन t फॉर्म में लिखा हुआ है. Yes, अब क्लियर है कि t का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? yes, sir. चलो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है. मैं यहाँ जीरोस बता रहा था. क्या बता रहा था? जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है. Polynomial expression. तो मैं पहला वाला इक्वेशन लेता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. px is equals to 5x minus 10. Okay. Yes, sir. Can you put the value of x is equals to 1 here? Yes. So just put it. So p1, so I can say 5 times 1 minus 10. It gives me how much? Minus 5. Okay. Can you put the value x is equals to 2 in this? Same. Sir, 0. So it's coming here 0. Work out more. P3. So it's 5 times 3 minus 10. It gives me how much? 5. Now, by looking the values of x, which x value gives you the complete equation as a 0? Sir, 5 No. in the form of 2. X is Sorry, equal in the form of 2. x is equals to 2, right? Yes, sir. So when I put x is equals to 2, then p of x becomes 0. p of x becomes what? 0. मतलब इसकी वैल्यू हो गई पूरी की पूरी. देखो ये p2 हो गया 0 के बराबर. Yes, sir. कब हुआ ऐसा? जब हमने x is equals to 2 रखा था, right? Yes, sir. Then for in this expression, 0 of this expression is 2. So 2 का मतलब हो गया बेसिकली 0 का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ x which makes the expression 0. अब क्लियर हुआ 0 का मतलब क्या है? Yes, sir. 0 का सिंपल मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल जिससे होल इक्वेशन विल बिकम 0. Okay, I will take one more example. Just give me a moment. I'm just taking one more. f of x. मैंने क्या लिया? f of x. अब पॉलिनोमियल Yes, है fx. पहले p लिया था, अब हमने fx ले लिया. ठीक है, कोई yes, sir. प्रॉब्लम? No. ओके, एक सेकेंड. चलो मैं एक चीज बता देता हूँ. गिव मी मोमेंट प्लीज. Yes, sir. ओके जस्ट अ सेकेंड.
ठीक है, आई एम टेकिंग द एक्सप्रेशन हियर x square plus x minus 6. What expression I have taken? X square plus x minus 6, right? Now do one thing. Put x equals to 1. So check out what is coming when I am putting 1. So 1 square plus 1 minus 6. It will give me how much? Minus 4? yes sir. Okay. When I put x is equals to 2, देखो मैं ये 1 2 3 इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि जीरो क्या होता है। जब आप जीरो अच्छे से समझ जाओगे ना तो इतना करने की Yes, sir. जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएगा, आप नंबर से निकाल सकते हो, या फिर मैं एक तरीका वैसा बताऊंगा जिससे डायरेक्टली आप जीरो ही निकल जाएगा। लेकिन अभी मैं Yes, sir. सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं आपको वर्कआउट करने के लिए मौका दे रहा हूँ कि पहले समझो कि जीरो होता क्या है एक्चुअली। ठीक Yes, है, sir. सो यहाँ पे देखो, यहाँ मैं पुटअप करूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 minus 6. It will give me how much? Plus 0. Now let's work out x is equals to 3. So मैं 3 पुटअप कर देता हूँ. So 3 का स्क्वायर प्लस 3 minus 6, it gives you how much? तो Also 1. 9 12, ये 6 होगा ना? हेलो, Oh, yes, sir. ओके. Now x is equals to minus 3 पुट कर लो. x is equals to Minus 3. minus 3. So minus 3 का स्क्वायर plus minus 3 minus 6. It gives you how much? Tell me. अगर देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा, ये Yes, sir. minus 3 हो जाएगा, minus 6 हो जाएगा. So it will give me 0, right? 0. So now can you tell me, in this expression, what are the zeros of the expression? Sir, Zeros of expression are? sir, 3 and minus 3. नहीं, 3 कैसे हो जाएगा? 3 पर तो हमें 6 मिल रहा है. Oh, sorry, sir. Just minus 3. नहीं यार, 2 नहीं होगा क्या? And ऊपर 2. देखो. Yes. So zeros are 2 and minus 3. तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब आपने 2 and minus 3 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हुआ? यहाँ पे whole expression becomes, the whole expression becomes Um, 0. Understand? yes, sir. Okay, that's great. So do you understand what is a zero? Zero means the value of x, the value of x, which makes the complete expression as 0. 0. Clear है? Yes, sir. Okay. So आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिख लो नोट में ताकि आप कंफ्यूज ना हो. So zero of expression is the value of x. x मतलब वेरिएबल आप बोल सकते हो, Yes, राइट? sir. Value of x which makes complete expression as 0. Hence the value of x known as 0 of expression. Are you clear with this? Yes, sir. Okay, जल्दी से नोट कर लो. एग्जाम में जो है यहाँ तक बस आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है? Yes, एग्जाम, sir. these parts are not important part. Yes, sir. Important part इस चैप्टर में जो है that is called remainder theorem, factor theorem and factorization. and इसमें कुछ पार्ट आते हैं जिसमें हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर. दोज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ओके, Yes, अभी sir. तक हमने जो भी पढ़ाया दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज, टू इंक्रीज द नॉलेज आई हैव टोल्ड यू. ओके Yes, sir. ओके, क्लियर है? अभी कोई दिक्कत Yes, इसमें? sir. तो No, आप sir. एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो ताकि आपको याद रहे कि कैसे जीरो निकालते हैं, तो भूल जाओगे आप. नोट कर लो इसको. Sir, I've already written. Already written? Okay, that's great. Okay, good, perfect.
अब देखो इसमें टॉपिक आता है हमारे पास जो मैंने अभी बताया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन आती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का काम करना चाहूंगा। ओके, because if I will directly jump in remainder and factor theorem, you might confuse. So I will go for factorization first, and then I will come back to remainder and factor theorem. Okay, Yes, sir. बिकॉज फैक्टराइजेशन से क्या होगा कि हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही सॉल्व हो जाएंगी। Yes, sir. ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं, हम कुछ फैक्टराइजेशन में सीखते हैं पहले। ठीक है, सो Yes, sir. फैक्टराइजेशन में आते हैं हम लोग, टॉपिक लेते हैं। फैक्टराइजेशन, देखो बहुत से लोग आपको कहेंगे कि फैक्टराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन हो गए, ग्रुपिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैंने Yes, sir. एक सिर्फ जनरल रूल बनाया है। आप कोई भी मेथड हो, कोई भी फैक्टराइजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, follow the rule and you will get the answer. Okay, Yes, sir. so I'm just going to write down the rule one by one and you will understand what does it mean. Okay, Yes, so sir. फैक्टराइजेशन के मैंने रूल्स बनाए हैं। ठीक है, so I'm just going to tell you about the rules. So rule number 1, whenever you see a question, whenever you see a question for factorization, first find out the common. Find out what? Common. Find out the common. Is that clear with you? Yes, sir. Okay, if you are not getting the common, then move to the second part. If you are not getting the common, move to the second part. Okay, Yes, in sir. the second part, the rule is try to make group. Try to make group. अगर ग्रुप भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आपसे ग्रुप नहीं बना, ठीक है, मान लिया कि ग्रुप क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रुप नहीं बन रहा, मुझसे नहीं कर सकते, then we will think for the rule number 3, that is known as split the middle term. Split the Middle term. middle term. अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, समझो उस क्वेश्चन ऐसा था कि ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, then we will use identities. Okay, these are the rules. So ये बस ये 4 रूल है जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो अपने दिमाग में रखना है। Yes, sir. तो आप इस रूल को नोट कर लो, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है। Yes, sir. नोट इट डाउन फास्ट। नोटेड? Yes, sir. सो याद रखना ऑलवेज, फैक्टराइजेशन कोई भी हो, कैसा भी क्वेश्चन है, दीज 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं और कुछ सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है अभी। ठीक है, कैन यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन? कैन यू रीड Yes, द sir. फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड? Factorize 5x square minus 2x square. ओके, अब मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, देखो ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, Yes, sir. 5 times x times x, can I write the first term as like this? Yes, sir. And second term, can I write down the second term as 5 times 4 times x times y? Yes, sir. समझाने के लिए मैं लिखा हूं, लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, Yes, sir. अब देखो क्या करेंगे हम। रूल नंबर क्या था मेरे पास? फर्स्ट फाइंड आउट द कॉमन, राइट? Yes, तो sir. कॉमन क्या होता है? दोनों ही टर्म में कॉमन निकालना है। ठीक है, तो चलो कॉमन हो गया जी, 5 कॉमन हो गया, Yes, sir. And x. लिख लो 5 कॉमन, x भी एक कॉमन आ गया, राइट? Yes, sir.
तो x को भी कॉमन। उसके बाद देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या दोनों में? नहीं है। Nothing. So we will put the bracket. What is not common in the first term? Sir, x What is not common in the second term? minus 4y. Minus 4y. Good. Now is it possible to factorize further? हमारे पास grouping बना सकते हैं, नहीं बना सकते? Splitting the middle term आया, नहीं कर सकते? Identity नहीं. We will leave it at here. Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Okay. Second question में आते हैं. चलो. Second question भी same इसी तरीके का है. So if you see here, I can write 36 as 6 times 6 times 8 times 8 times 8 times b, and if you see the 60, I can write 6 times, अच्छा 10 times 8 times 8 times b times c, right? अब Yes, sir. एक चीज यहाँ देखो आप, इस 10 को भी हम और भी कुछ लिख सकते हैं. इस 10 को I can write 2 into 5. Can I write that? Yes, sir. और यहाँ पर इस 6 को भी हम 2 into 3 लिख सकते हैं, because something is common more in this, Yes, right? sir. अगर आप पहले नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, आगे चल के हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सो फर्स्ट विल फाइंड द कॉमन. सो कॉमन क्या मिल गया मुझे? 6. उसके बाद क्या मिला मुझे कॉमन? 2. 2. उसके बाद कितने ए कॉमन मिले? 2 ए कॉमन Two. मिल गए. सो आई विल राइट इट डाउन हियर, a square, and what is common? B is the common, right? Yes, sir. So B. Now what is left? 3ab is left here. नहीं, b तो ले लिया मैंने, तो 3a is left, right? Yes, sir. Minus what is left here? ये ले लिया है, ये भी ले लिया है, so 5c is left. अब इसमें कुछ हम कर सकते हैं क्या? So we can write just 12a square b, and then we can write 3a minus 5c. अब इसमें Yes. कुछ और फर्दर हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते. So we will leave it at here. Understood? Yes, sir. So please make a note of it fast. इसको, ये टाइप था कॉमन ग्रुप वाला. Yes, sir. Yes, sir. Done. डन. अच्छा, अब देखो मैं दूसरा एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ. दैट इज, लोग ग्रुपिंग बोलते जरूर हैं, बट मैं ग्रुपिंग नहीं करता, मैं रूल फॉलो करता हूँ. ठीक है? Yes, sir. बिकॉज इतना नाम याद रखने हम याद नहीं रख सकते इतने सारे नाम. अब देखो हमारे पास पहले क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं? Sir. 4. In all 4 terms, are you getting anything common? Sir, not all 4 of them don't have something in common, but 2 of them will. Right, that's why I have asked the question. In 2 of them you are finding the common, but not Yes. in all 4, right? So Yes, sir. make the group first. Make the group first. It's your choice to make the groups. So I will make the group of this, and I will make the group of this. Okay? So look Yes, sir. here, I am making the group a plus b, b plus c, and then ax plus cx. अब ग्रुप बना दिया, अब इस ग्रुप में कॉमन मिलेगा कुछ? Sir, no. Why? B is the common in this one. Oh, yes, sorry, sir. So B is the common. So what is left in this? A and C. Good. Now I will write on plus as it is. What is common here? Sir, X is the, so X is the common, and I will write down A plus C. yes, sir. ऑलवेज याद रखना, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, क्या वो Yes, sir. एग्जैक्टली सेम है या अलग है? Sir, same. Same. So this is making one term, this is making another term. Yes, sir. What is common in that? A plus C is the common. Common. Yes, sir. So I will take out A plus C. What is left in the first term now? B. B plus X. Good. So do you clear how to make the groups and how to solve Yes, it? sir. Similarly, we will move to here. So now you can see I can make the group of this, and I can make the group of this. Okay. So look here, I'm just writing down. So X plus 3. Now in the first 2 terms, what is the common? What is the common in the first 2 terms? Sir, X. X is the common. What is left? Plus 3 and 1 X. X plus 3 is left, right? Yes, sir. Now what is the common in this 2? Sir, nothing. तो nothing का मतलब 1 हो जाएगा.
1. Yes, sir. नथिंग मीन्स 1, क्योंकि 1 ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, राइट? Yes, sir. So write it down here 1, and you can write it down here x plus 3. So it will become here, ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है? Yes, sir. X plus 3. हाँ, अगर ब्रैकेट में कॉमन नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है. Yes, sir. So now this is your answer. So आप Yes, इसको sir. नोट कर लो. Sir, I've already written. Already written? Okay. So I'm taking one problem which is really very interesting, and I Yes, will show you how to solve that. Okay, because ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा है इन लोगों ने. yes, sir. Just give me a second. I'm going to show you right now. Okay. Can you read this question, please? X square plus 1 by x square plus 2 minus 2x square minus 2 by x. Okay. Fine. What you can see in this? How many terms we have? So 5. 5 terms. Okay. I will give you. अच्छा, एक चीज मुझे आप बताओ, a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, मालूम है? Sir, Grade a 8 में square पढ़ा था. plus b square minus plus 2ab. Good. It will become a square plus b square plus 2ab, right? और Yes, sir. a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है? Sir, a square plus b square minus 2ab. गुड, परफेक्ट. ओके, जरा आप एक चीज यहाँ देखो, मैं एक चीज यहाँ दिखाने जा रहा हूँ आपको. क्या इसको एक ग्रुप में डाल दें और इसको एक ग्रुप में डाल दें? Yes, sir. देखो मैं एक ग्रुप में लिख रहा हूँ, पहले ध्यान दो. ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में हम? Sir, 2 -2 कॉमन ले सकते हैं, राइट? minus 2. Yes, sir. अच्छा, -2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये बच जाएगा हमारे पास. Yes, sir. अच्छा, चलो. अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्रैकेट में, Sir, क्या ये कुछ इस पैटर्न पे है? क्या दिख रहा है क्या इस पैटर्न पे? हेलो. yes, sir. Yes, sir. ए प्लस बी के फॉर्म में है क्या ये? कैसे है मैं दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड सेकेंड. जरा आप एक Yes. काम करो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर? जरा वर्कआउट करो मेरे साथ. सो इट विल बिकम हियर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1 बाय x. कैन यू राइट दैट? Yeah. मतलब a की जगह पे x लिख दो, b की जगह 1 बाय x लिख दो, ठीक है? Yes, sir. तो ये देखो, ये कैंसल हो जाएगा. Yes, sir. So it will be left what? X square plus 1 upon x square plus 2. Yes, sir. तो हम इसको x square plus 1 upon x square plus 2 को लिख सकते हैं x plus 1 upon x का whole square. Yes, sir. So I'm just writing down x plus 1 upon x का whole square minus 2 x plus 1 upon x. कोई प्रॉब्लम? No. अब आप एक चीज देखो ध्यान से यहाँ पे. Is this coming same? Yes, sir. बस स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है. Yes, sir. तो But अगर inside the bracket it's the same. इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, तो हम इनसाइड का ब्रैकेट को कॉमन मान लेते हैं. Yes, sir. x plus 1 upon x is the common. What is left here? Here. So यहाँ पर बच गया 1 x plus 1 upon x, right? Yes, sir. और यहाँ बच गया just 2. Can you see that? Yes, sir. So अगर हम इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें, so ये बिकम हो जाएगा x plus 1 upon x, और यहाँ बन जाएगा x plus 1 upon x minus 2. This is the final answer. Yes, sir. And this part is the rough part. मैं यहाँ लिख देता हूँ rough. Okay? Yes, So sir. please make a note of it fast. ये समझ आया कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग? क्लियर है? Yes. Okay, so please do it, note it down fast. Done, sir. Okay. चलो, ये सब प्रॉब्लम्स तो जी थी नॉर्मल. अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में, and that is called, the method is known as split the middle term. Okay? Yes, sir.
यस। स्कूल में कहाँ तक हो गया, ये सब हो गया स्कूल में? No, sir. We just started the chapter today. ओके, जस्ट स्टार्टेड द चैप्टर। Yes, sir. ओके, तो जस्ट स्टार्ट की, पहले क्या स्कूल क्लासेस नहीं हो रही थी? No, sir. We started with number system, ओके, देन? and then right now we're doing this. ओह ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा, हमने फैक्टर एंड रिमाइंडर अभी नहीं किया है वो इससे पहले आता है, बट हमने फैक्टराइजेशन पहले चूज इसलिए किया कि हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए सॉल्विंग करने में, तो हम रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन, सॉरी, रिमाइंडर एंड फैक्टर थोड़ा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, दैट इज known as split the middle term, okay, Yes, sir. and that is very very important one, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे आइडेंटिटीज वाला, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। फैक्टराइजेशन का ही टॉपिक है, बट दिस इज नोन एज स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको बोलते हैं स्प्लिट द Middle term. मिडिल टर्म मेथड। याद रखना, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड में 3 टर्म्स जनरली देते हैं। क्या देते हैं ये लोग? 3 3 terms. टर्म्स जनरली देते हैं, एंड दिस विल बी सॉल्व्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो जाएगा? अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यों हो जाएगा क्वाड्रेटिक? व्हाई इट विल बी क्वाड्रेटिक? व्हाट इज द रीजन? Sir, 3. नहीं, टर्म्स 3 है, बट व्हाट इज द डिग्री? Sir, 2. Degree is 2. Remember it. If the degree is 2, we call it as quadratic. Quadratic. And if number terms are 3, so that is known as? Sir, terms are 3. That's not trinomial. So that will be trinomial, right? Yes, sir. Okay. So quadratic कहने का मतलब कि degree is 2, right? So Yes, sir. इस टाइप के मेथड्स में जनरली हमें क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन मिलता है, राइट? सो Yes, sir. दिस वन आई हैव रिटन, मैं रब कर देता हूं ऊपर से, गिव मी अ सेकंड। Yes, sir. So this one I have written general quadratic equation. General Quadratic equation. quadratic equation I have written down here. Any problem? Yes. No, sir. Okay. जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं Yes. बताता हूँ। मैं क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे x² प्लस 9x प्लस 18। क्या क्वेश्चन दिया? x² प्लस 9x Plus प्लस 18. 18। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर आप देखोगे ऊपर से जरा मैच कराओ, ऊपर से मैच कराओ। x² के आगे क्या है? कोफिशिएंट इज a. So what is the coefficient? Nothing is given, so 1 is there. Nothing is given, so 1 is there. ठीक है। अब देखो, अब मेरे रूल्स को याद रखना। क्या करते हैं हम लोग? पहले सबसे पहले हम लोग काम करते हैं multiply a times c. So what is the value of a in this? 1. 1. What is the value of c in this? Match कराओ, match कराओ। 18. 18. So I need to multiply 1 times 18. It will give me how much? 18. 18. Yes, sir. Now we will factorize the 18. We will what? We will Factor. factorize the 18. So when we will factorize it, you can see I am getting 2 times 9 and I am getting 3 times 3. Can you see that? Yes, sir. So how many number I am getting right now after factorization of 18? Yes, sir. 18 को फैक्टराइज करने पे कितने, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने में कितने नंबर्स आए? 3. 2 into 2. 2 into 3 into 3. लेकिन हमें सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं। Yes, sir. हमें क्या करना है? Two Only 2 numbers, not 3. Is that clear? Yes, sir. So you can see, if I take 2 and if I take 9, so when I Yes. will add or subtract, will it give me 9? Yes, sir.
कैसे? इस Sorry, no, sir. This won't happen. it's not giving me 9, right? No, sir. 9 means the middle one. 9 means what? Middle term. मिडिल टर्म. इसको ऐड, दो ऐसे नंबर बनाने हैं इनकी हेल्प से कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करें तो हमें मिडिल नंबर मिल जाए. ठीक है? Yes. तो अब देखो, अब मैं इसको और इसको ले लेता हूं. तो क्या है नंबर मेरे पास? 6 and 3. क्या हम इसको ऐड कर देंगे तो मिडिल नंबर मिलेगा क्या मुझे? And Right. remember it, the same number if you multiply, then you need to get it this number. So are we getting this? Yes, sir. We are. Are we getting the middle number also? Yes, sir. So if two conditions are satisfied, that means we have done great. So I can write down here 1x square. In the place of 9x, you can see I'm writing 6x plus 3x plus 18. Can you see that? Yes, sir. So आप यहाँ देखो, मैंने 9x को ही स्प्लिट किया है 6 में और 3 में, और उसका तरीका यहाँ पर बताया है आपको करने. Yes, sir. अब देखो क्या करेंगे. फर्स्ट 2 में देखो कुछ कॉमन है क्या? First two. X is the common. Yes, sir. So x is common. So what is left? X plus 6. X plus 6. And what is left? What is common here? 3. So again x plus 6 in the bracket, right? Yes, sir. So bracket अगर सेम नहीं आया तो गड़बड़ हुई है. Yes, sir. ब्रैकेट को सेम आना जरूरी है. Yes, sir. So I can write down again x plus 6 here and then x plus 3. Now it's done. Yes. Understood? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ तब तक. Yes, sir. Done. Okay, I'm taking another problem and I will just show you. Give me a moment. Okay, can you see this? Yes, sir. Okay, in this if you see here, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, a b कुछ नहीं लिख रहा है. ठीक है? अब Yes, देखो sir. यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? X square. नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, राइट? यहाँ पर क्या है नंबर? -3. गुड. सो टेक इट टुगेदर. 6 and -3 कितना हो जाएगा? -18. Okay, can we factorize it? So are we getting 2 and 9? तो ये -18 है. क्या है? -18. तो अब देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 and 9 और मुझे एक काम करना है. मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? Sir, 7. तो क्या 2 और 9 अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मिल सकता है क्या? Yes, sir. 9 minus. ओके, तो हम इसमें प्लस साइन है, नेगेटिव साइन है? Plus. तो किसको बड़ा प्लस रखें? 9 को प्लस रखें, 2 को प्लस रखें? 9. 9 को प्लस रखेंगे और 2 को माइनस. 9. So it will give me the middle number. Yes, sir. 7. And when I multiply this, will it give me this part? Yes, sir. it will. So now both are satisfied. Yes, sir. So now let's work out. 6x square plus 9x minus 2x minus 3. Any problem? No, sir. What is the common in the first two? 3. Then 3 and x. Right. So I can write 2x plus 3 in the bracket. 3. Yes, sir. What is the common in the last two? Sir, 1. Only one or minus 1? Minus 1. Minus 1 I can take. So it will become here 2x plus 3, right? Yes, So sir. is my bracket coming common? Yes, sir. So I can write 2x plus 3 and then I can write 3x minus 1. Hence, Yes, sir. factorization done. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So these are the steps. So right now आप अपने बुक से सॉल्व करो. ठीक है? आप कौन सा बुक फॉलो करते हो? Sir, NCERT. अच्छा, और कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं करते आप? Sir, I have R.S. Agarwal and R.D. Sharma. ओके, आर.एस. अग्रवाल है ना? Yes, sir. ठीक है, उसमें आई थिंक ये चैप्टर नंबर 2 होगा, राइट? Yes, sir.
ओके तो आप देखना उसमें चैप्टर नंबर 2 में फैक्टराइजेशन टॉपिक होगा, ठीक Yes, है। sir. स्टार्टिंग का टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जो कि पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो Yes, फैक्टराइजेशन आप थोड़ा सा स्टार्ट करना, इसको वर्कआउट करो आर एस अग्रवाल से, yes, ठीक sir. है। आर एस अग्रवाल से फैक्टराइजेशन करो और फिर हम एनसीईआरटी से भी कर लेंगे, एंड आई विल शेयर सम क्वेश्चन पेपर आल्सो लेटर, ओके, Yes, एंड देन वी विल सी फर्दर। इज दैट क्लियर? yes, sir. Okay, ठीक है, so we will meet in the next time, okay, Yes. till Thank and you, I will share the PDF and the video with your email ID or WhatsApp, okay. Yes, sir. Okay, okay, fine, okay, bye, take care. Thank you, sir.